भारत और रशिया के जॉइंट कोलैबोरेशन में बना हुआ ये है वंदे भारत स्लीपर का एक इंटीरियर प्रोटोटाइप यूनिट जो कि किनेट के द्वारा बनाया गया है। आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कोच के अंदर कौन कौन सी अनोखी चीजें हैं, लेकिन ये भी बताऊंगा कि ये एक्चुअल पार्टनरशिप क्या है भारत और रशिया के बीच में इस ट्रेन को बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं समझा देता हूँ कि ये पार्टनरशिप बेसिकली है क्या। दोस्तों, वंदे भारत के सक्सेस के बाद में एक स्लीपर वर्जन का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले ही रख दिया गया था और प्लानिंग में भी लंबे समय से था, लेकिन ये थोड़े थोड़े ऑब्स्टिकल्स के थ्रू ही गुजरता रहा। 2022-23 में इंडियन रेलवेज ने एक टेंडर फ्लोट किया जहां पर 200 ऐसे स्लीपर ट्रेन सेट्स बनाने की डिमांड रखी गई थी और ये ग्लोबल टेंडर था। दुनिया भर से कंपनीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सरकारी कंपनीज भी होती और फॉरेन की कंपनीज भी। इसी के अंतर्गत इंडिया के अंदर के रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, जो एक पब्लिक सेक्टर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इन्होंने TMH, रशियन एक रोलिंग स्टॉक मेजर कंपनी है, उनके साथ में पार्टनरशिप की 120 ट्रेन सेट्स को बनाने के लिए, जो अराउंड 1920 कोचेस का ऑर्डर निकल कर आता है स्लीपर वर्जन में। और ये एक सही समय भी था क्योंकि रेल कोच फैक्ट्री जो लातूर के अंदर बनी हुई है, ये कुछ समय से ही अपना ऑपरेशन चला रही है और इसीलिए एक बड़ा मॉडर्न ऑर्डर इस फैक्ट्री के लिए परफेक्ट था। और ये दोनों कंपनी के बीच में बना हुआ जॉइंट वेंचर इस फैसिलिटी को यूज करते हुए मेक इन इंडिया स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने के लिए आगे आता है। अब यहाँ पर कोलैबोरेशन ऐसा है कि रशियन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल इनपुट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, जबकि मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंक्लूडेड होगा कई चीजों के अंदर। और रेलवे का जो मेजर अपग्रेड होने वाला है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के अंदर, जैसे वंदे भारत ने किया है, वैसे स्लीपर वर्जन के अंदर ये दोनों देश मिलकर अपने कंपनीज के थ्रू करने वाले हैं। अब 1920 कोचेस मतलब कई समय तक, कई सालों तक जो है इसी ऑर्डर के भरोसे फैक्ट्री जो है अच्छे कैपेसिटी पे चल सकती है। और इसी में बहुत ज्यादा प्लानिंग हुई, प्रोटोटाइप हुई, डिजाइन जो है उसको आइटरेट किया गया और फाइनली IREE 2025 में एक 4 बर्थ कंपार्टमेंट जो कि फर्स्ट क्लास कॉन्फ़िगरेशन में होगा, वो यहाँ पे दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर चेंजेस क्या है। अब देखो, स्लीपर वंदे भारत तो मैं आपको बता चुका हूँ जो BEML वाली बनी थी। अब इसमें फर्क क्या है? देखो, मेजरली यहाँ पे फर्क जो है वो काइंड ऑफ एक कोजीनेस में देखने को मिल रहा है। जो कलर्स चूज किए गए हैं, जो पैटर्न्स चूज किए गए हैं, जो लेवल ऑफ फिनिश है, वो आपको किसी होटल रूम की याद ज्यादा दिलाएगा रादर देन AC फर्स्ट क्लास केबिन। इनफैक्ट जो यहाँ पे डिजाइन में लीड में थे उनसे भी मैंने बात की, एक रशियन। तो आगे जो वीडियो में आपको इनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे डिजाइन की पीछे की बहुत सारी फिलोसॉफी भी समझ में आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर चेंजेस की मैं बात करूँ तो पहले आपको काइंड ऑफ मोटे स्टेप्स नजर आ रहे थे ऊपर के बस पे चढ़ने के लिए। ये स्पेस एफिशिएंट भी इतने नहीं थे, साथ साथ काफी ब्लॉकी नजर आते थे। इनको रिप्लेस किया गया है स्टेयरकेस के साथ, जिसके ऊपर रबर पैडिंग भी दी गई है, जिसके कारण ऑब्वियसली चढ़ना जो है आसान बनेगा। अब एस्थेटिकली अच्छा या बुरा ये आपका ओपिनियन हो सकता है। इसके अलावा जो हमें दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में देखने मिले थे, वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी बिल्ड इन USB पोर्ट्स, इंडिविजुअल रीडिंग लाइट्स, स्मार्ट स्टोरेज कंपार्टमेंट्स है। USB पोर्ट्स या जो कहे पावर यूनिट भी इस तरीके का दिया गया है कि उसमें प्लग भी लगा सकते हो, टाइप C भी लगा सकते हो, नॉर्मल USB चार्जर के वायर भी लगा सकते हो। साथ साथ प्रीमियम मटेरियल्स जो है यहाँ पे मेनली इस्तेमाल किया गया है। ऑलमोस्ट हर एक सरफेस सॉफ्ट टच है। बॉटल होल्डर्स जो है हाई क्वालिटी के फोल्डेबल है और डिसेंट साइज की बॉटल को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली साइड टेबल भी दिया गया है और नीचे स्पेस अच्छी खासी छोड़ी गई है जो कि लगेज रखने के काम में आएगी। ऊपर वाले बर्थ पे भी नीश स्पेस दिया गया है, फोन बुक वगैरह कुछ रखना है तो रख सकते हो। बात करें एग्जैक्ट ट्रेन की तो 16 कोच की एक ट्रेन होगी जो 160 से 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलने के लिए केपेबल होगी और ये जल्द ही प्रोडक्शन में जाएगी और रैंप अप होते हुए हमें बहुत स्पीड से वंदे भारत स्लीपर जो है रोल आउट होते हुए नजर आएगी। दूसरी जो वंदे भारत स्लीपर ICF के थ्रू बनी थी वो ऑलरेडी ट्रैक्स पे आ गई है। अब पहली वाली रेक का टेस्टिंग अच्छा खासा हुआ था तकरीबन साल भर पहले। अब सेकंड वाली का भी रिगरस टेस्टिंग होगा, जिसके बाद में एक पेयर ऑफ वंदे स्लीपर मिल जाएगी और ये पेयर जो है चलाई जा सकती है किसी रूट पे। और काइंड ऑफ सिमिलर वंदे भारत स्टोरी जो है कि पहले 2 ट्रेन को काफी समय टेस्ट किया गया, फिर बहुत तेजी से रेक्स ऐड की गई। सिमिलर कहानी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आगे इस वीडियो में आप इंटरव्यू देखेंगे जिसमें इस ट्रेन के डिजाइन लीड के द्वारा आपको कई ऐसी चीजें जानने को मिलेगी इस ट्रेन के डिजाइन के पीछे, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द चैनल Powertrain, and sir, my first question, I'll just directly land on the questions. Russia and India both have very different climates and people have different tastes. So when it comes to design, what particular things were changed
in the interior design which were India specific? May I ask in other words? I think I didn't see any differentiation, a lot of differentiation Okay. between the people, because basically what the people need, especially when they're dreaming about the future, the comfort, personalization, and safety. This is a topic all, doesn't matter where you're in India and Russia. What topic I think we are really close to each other. We always, for us, always not enough to have just like something looking nice. We're always trying to find a nice point in the culture, in the past. That's what was for me also pleasure to work with this project, because it was a lot of skills for me while I'm trying to talk with people what they need, what the travel is, because I think the understanding what is journey in Russia and India are really different. So when it comes to designing interior of a train, the seating and all, as a designer, how like what's different when it comes to designing interior for a train? I think it's not so different. The only point, when you're talking about exterior, especially when we're talking about our project, for us was important to find, how to say, emotion. If you know the car industry, what's more important in the car? What you feel, because you love this car or you doesn't like it. It's always first impression, a little bit like in communication between the humans. In the exterior, really important to catch attention, to provide something really, really new what we did. Because our design is not just like another design of the mask. We really try to combine two industry, trains and cars. I have to say every details in our exterior, we make it with the attention how normally automotive designers doing that. Attention to the lights elements, it's look like a diamonds, some curves, shapes, silhouette, all. I think our train maybe more looks nicer than other cars. Yeah, I would agree. I would agree to this. And interior, of course, interior another topic. When we're starting interior, first of all, not the style or not impression, what we're talking before, but how to provide the feeling. When you're visiting a new hotel, what's important for you? Style, colors? I don't think so. For you, important how warm atmosphere inside. And this is a goal for our interior designers, to use the same space to provide different type of comfort by feature, by color, by materials. For example, for our interior, we create some concept. We call it soft touch. That means every shape, every material, doesn't matter, the upholstery or the wall. That means a feeling of. That means soft material should be the birth surface, soft itself. But soft means like a feeling. It's not should look like hard walls. It should be really cozy, really home looking. And aesthetical points. We create, for example, a special pattern together with Indian designers. You know this technique, special when you printing on textile something with repetition. We did it the same. We repeat this technology, but inside the coupe. You see, we kind of the people who are ready for a different type of experiment, new materials, new patterns, new features like cup holders, personal light, special folding, comfortable elements. That's what we believe should be a kind of design of the future, doesn't matter train, mobility, let's say, to be a little bit out of the box and to think what the people dreaming, what they really need, instead like what they just need to travel. So my final question for you, how was it, like how did you felt while designing a train for India, on a personal level? That means like a marks, what will be good? What did you find different working with Indian engineers or Indian designers or the team as a project? Yeah. As a project, of course, I really like the culture, engineering culture in India, because we're a little bit close to the Russia. We always thinking how to produce it. I think we are really close by engineering culture. That surprised me. And second point, what I like, kind of openness for experiments. You know, sometimes culture they not ready for experiment with like trains, areas. What I like in India, they dreaming about really bright future.
and they want to find this bright future also in design, also in interior design of public transportation everywhere. I think it's really, really good mark for us, and it's really inspiring me. Thank you so much, sir, Thank for you. your valuable insights, Thank and you. thank you so much for your time.